and we make an error. So Allah subhanahu wa ta'ala do forgive for such persons who are having the good intentions. And Allah subhanahu wa ta'ala in this context stated in the Holy Quran, La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. So brothers in Islam, whatever has happened in our lives, whatever the sinful activities we used to be, we get involved in our past. So don't get afraid of the sinful activities, because this is the proclamation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is in the Holy Quran. This is the Allah's promise that if you're having your intentions good, if you are going after the sincere repentance, if you are asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, if you're running after for the sincere repentance, for tawbatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive all of your sins. So brothers in Islam, what we have been told about Allah subhanahu wa ta'ala, we believe in Allah because Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us, La ilaha illallah, La ilaha illallah. So when we recited La ilaha illallah, there is no ilah except Allah, there is no worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. So when we have believed in Allah subhanahu wa ta'ala, obviously here in the world, we came for the tests and trials. Brothers in Islam, there are going to be hardships of the life. When we have recited La ilaha illallah, when we have accepted by our heart and soul that there is no ilah except Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. So there are just two things, Wa'atiullah wa'ati Rasul, as we have discussed in our last sermon. So we cannot go beyond our endurance. We are incapacitated to think about Allah's hayat. We are incapacitated to think about how's gonna be Allah's face. So we cannot imagine that. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala because Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us there is ilah, that is Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Amma Nawaluhu. Brothers in Islam, when we have believed in Allah, when we prostrate in Allah subhanahu wa ta'ala, जब हम अल्लाह को सजदा करते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज होते हैं, तो अल्लाह ने इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो एक सजदा जिसे तू ज्ञान समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात. Brothers in Islam, we are not allowed to prostrate in front of anybody else except Allah subhanahu wa ta'ala. किसी और के दर पे सजदा रेजी जायज नहीं है. वो इलाह है, वो अल्लाह है, वो यकता है. उसकी शान ऐसी है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद. ऐ महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो अल्लाह है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है. ब्रदर्स इन इस्लाम, अब बेनियाजी पे बात करें तो बेनियाज जात कोई एक है जिसकी शान ऐसी है, लम यलिद, ना वो किसी से जना, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसके जोड़ का कोई. So brothers in Islam, what we are up to absorb and discuss and interpret is, if we prostrate in front of Allah subhanahu wa ta'ala, what we need is kamil yaqeen. What we need is respect in front of Allah subhanahu wa ta'ala. What we deserve, we ought, we must to have, that is strongest connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to strengthen our iman. Inna akramakum indallahi atqakum. You're respectable in front of Allah subhanahu wa ta'ala if you are at the higher status of taqwa, if you're afraid of Allah, if you believe you are going to be held accountable at the day of the judgment, at the day of resurrection. क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होने पे जिस भी बंदे को यकीन है और जिस भी बंदे को अल्लाह की वहदानियत पे यकीन है, वो अल्लाह से अपना करेक्शन ब्रेक नहीं होने देता. ब्रदर्स इन इस्लाम, दिस इज फूड फॉर थॉट दैट अगर हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, अगर हम अल्लाह की नहीं मानेंगे, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानेंगे, ब्रदर्स इन इस्लाम, believe me or not, this is in the Holy Quran. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. He is able of all doing. जेड़ा रब दी नाम में रब डाला है, रब मना लेंदा.
So if you are on the wrongdoing, if you're not on the straight path, if you're not on Sirat al-Mustaqim, there are gonna be pretty much hardships for you. There are gonna be much more tests and trials for you. If you accept Allah's decisions, if we accept Allah's decisions and we prioritize Allah's decisions on our decisions, it means that we have accepted Allah's decisions wholeheartedly by the heart and soul. That is the true meaning of being mu'min. When you have no contradiction between Allah's decisions and your own. One thing you want. Hadith Qudsi hai, you might have heard before. एक अल्लाह की चाहत है और एक तेरी चाहत है. होता भैया जो अल्लाह की चाहत है ब्रदर्स इन इस्लाम. So अगर आप उसको चाहोगे जो तुम्हारी चाहत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत थका देगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है. अगर तू सुपुर्द कर दे उसके जो तेरी चाहत है, तो फिर तुझे अता होगा वो जो तेरी चाहत है. ब्रदर्स इन इस्लाम, अल्लाह की शान ये है, He is in Allah ala kulli shay'in qadir. Brothers in Islam, He is able of all knowing. So He is innahu alimun bizati sudur. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया को जितने टेस्ट्स एंड ट्रायल से गुजारा, we can't even imagine. Let's talk about Khalilullah, Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah Rabbul Izzat, when angels talked to Allah subhanahu wa ta'ala, you had bestowed so much things to the Khalilullah, Hazrat Ibrahim alayhi salam, and Allah subhanahu wa ta'ala stated, okay, go and test my Khalil. An angel came, he had recited Allahu Akbar, Allahu Akbar. And Ibrahim Khalilullah used to have like so many sheep and goats. And he had requested, Khalilullah had requested to the angel who was in a form of mankind, जो इंसानी शक्ल में फरिश्ता था. खलीलुल्लाह ने कहा कि मैं कुछ उजरत पेश करता हूँ मेरे महबूब का, मेरे आका का, मेरे जल्ला जलालहू का, एक बार नाम ले लीजिए. उन्होंने कहा नहीं, उजरत लगेगी. ठीक है, आधा रेवड़ देता हूँ. दे दिया. उन्होंने एक बार फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. बकाया आधा भी दे दिया. To cut into short, दस्तबस्त अर्ज की, ऐ अल्लाह के बंदे, एक बार अल्लाह का नाम और ले दो, आपको रेवड़ एक चरवाहा भी तो चाहिए होगा इस रेवड़ के लिए, इतना बड़ा रेवड़ है. Angel went back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's mercy, Allah's favor for the mu'min, for the qalb mu'min. Allah Rabbul Izzat की मदद और नुसरत हमेशा से मुमिनीन की शामिल हाल रही है. हमेशा आसमानों से फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजता रहा है. But there supposed to be consequences, there's supposed to be circumstances, there's supposed to be heartfelt iman, there's supposed to be the strongest connection with Allah subhanahu wa ta'ala. दो चीजें हैं. जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गार में आका अलैहिस्सलाम को लेके गए गारे सौर में, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो's heart beat like overflowed, and उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऊपर आ गए तो हमें देख लेंगे. Unfortunately, if they come at front of the cave, they'll get to see us. Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, these are the verses of the Holy Quran. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. जब गार में थे, दो में से एक ने ये खदशा जाहिर किया, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Aka ﷺ has stated to the Siddiq Akbar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ला तहज़न इन्न अल्लाह माना, कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है. Don't be afraid of, Allah is in our favor, Allah is with us. तो जब नमरूद ने खलीलुल्लाह को आग में डाला, कितने महीनों और कितने हफ्तों को आग जलाई गई, भड़काई गई, अपनी पूरी बादशाहत उसने लगा दी आग जलाने पे. फिर खलीलुल्लाह से कहा कि अपने मनसब से बाज आ जाओ. उन्होंने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ. तो उन्होंने फेंक दिया, आग में फेंक दिया सबने. जब नमरूद ने खलीलुल्लाह को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, तो
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ब्रदर्स इन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आग भी ठंडी कर दी। So conclusion is everything belongs to Allah and we belong to Allah and we have to get back to Allah subhanahu wa ta'ala. Things are temporary over here. We need to build our strongest connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah की शान ये, He is in Allah ala kulli shayin qadir. He is innahu alimun bi zati sudur. He is Sami'un Basir. So जब सारा खेल अल्लाह रब्बुल इज्जत का रचाया हुआ है, without having great and strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to astray in the world and we are not going to get succeeded here and hereafter. So brothers in Islam, mandatory, pivotal, important things are to have strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, strong connection with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How can we get to achieve that status, that taqwallah? Through the Holy Quran, through having concerns, true concerns to the seerah, to the uswa hasana of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah Pak bless us, may Allah Pak give us tawfiq to follow the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and may Allah subhanahu wa ta'ala bestow us, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to read the Quranic Kareem with the translation, and may Allah subhanahu wa ta'ala bestow us the light of the Holy Quran for us and for our coming generations. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.